Good morning, children. Good morning, ma'am. Good morning. So, as you all know that we have completed our syllabus. Some of you were querying me about the revised syllabus. That I will tell you in 1 or 2 days. The chapters which I am telling you to learn or read, or which we are revising in the class, side by side, you all prepare those lessons so that you are getting prepared for your final exam also. But the final revised syllabus, that will be announced when I will get it confirmed. Acid, bases and salt. This was the topic which I told you to learn or read. Have you all read it? इसको पढ़े हो तुम लोग? Tell me yes or no. आप लोग चैप्टर 4 पढ़ के आए हो, रीड किए हो? Okay, till you all are joining. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. So children, I have told you that I will give you the revised syllabus when I get confirmed from the school that this is the final one. Then I will tell you in the group or in the class also. One by one, you all, whatever chapters I am telling you to revise, those chapters you all read. और उसको लर्न करो साइड बाय साइड व्हेन आई गिव यू द होमवर्क एंड ऑल आप लोग उसको पढ़ते जाइए ठीक है तो हम लोग उस दिन कौन सा चैप्टर किए थे चैप्टर नंबर 4 वी हैव स्टार्टेड है ना Yes, ma'am. 4 स्टार्ट किए थे तो उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे वी विल कंटिन्यू दैट चैप्टर ओनली Okay, in this chapter, acid, bases and salt. What have we learned? हम लोग क्या पढ़े हैं इसमें? About acids, that acids are sour in taste, bases are bitter in taste, and when acid and bases combine, जब acid और base मिलता है, तो क्या बनता है? Salt and water. And water is formed. That we have studied. ठीक है? Then today we will one by one talk in this chapter or discuss in this chapter that what are the different types of acids, what are their characteristics, how they are formed. So let us do that. हम लोग को वो अभी पढ़ना है. So I'll put up one question. What are the different types of acid? Acid you all know. आप लोग acid जानते हो? जानते हो ना? Ma'am, two types of acid. Two types of acid. Two types of acid. Then organic acid. Name them. Mineral acid, example hydrochloric acid and sulfuric acid, and organic acid, example formic acid and lactic acid. Okay. Then acid, first of all, if I tell you what is the definition of mineral acid, what definition will you give? Tell me. Acids which are prepared from Acids which are formed by the minerals present on earth are known as mineral acid. Example HCl. Are formed by minerals present on the earth. We all know what are the minerals. What are the minerals present on the earth? कौन कौन सा minerals है?
sulfur, hydrogen, Iron, chloride, हाँ iron, हाँ, iron, sodium, potassium, these all iodine, are your chloride, minerals are present. iodine, ठीक है? Then when they combine with the acid, then with that combination also we have studied. Do you all remember in class chapter number 3 we have some of the elements name और उसको हम लोग formation of that acid has taken place or salt has taken place or compound has taken place. That we have discussed in this chapter. So some of the chemicals which are prepared or compounds which are prepared by the composition or by the combination of these elements, that also I think you all remember. याद है या भूल गए? yes. अगर मान लो हम बोलते हैं how is aluminum sulfate prepared, then what will be the formula and how will you just form that this aluminum sulfate? Just a recapitulation, आपको जानने के लिए हम पूछ रहे हैं. First, precipitate the aluminium, the formula of aluminium sulfate. बोलो, tell me. Al4SO3. No, not we will write the Al4SO3. valency of aluminum plus the valency of Listen, sulfate, I and then think we you will all have crisscross just them. stopped. बोलो, who is telling? बोलो, formula बोलो, tell me. That like I have told you, aluminum sulfate. So aluminum symbol, write the symbol. I tell Al2SO4 Then we write Al2SO4 मैम सब लोग हल्ला करो, क्या नहीं दिख रहा है, अच्छे से नहीं सुनाई दे रहा है। मैम सब हल्ला करो कि काम सुनाई नहीं दे रहा आपका आवाज। Listen, children, all of you others, please pay attention. If you really want to learn, others, if you don't want to learn, then it's okay. माइक से बहुत आवाज आ रहा है। हाँ, that I can see. Please mute yourself, all of you. And Prince Raj and all, if you are not interested, others, if you are not interested, leave the class. Okay, now here. Listen, children, please go to some aloof place where you can continue your class. Adarsh Kumar, please mute yourself. Then here we are with this symbol that Ma'am, is making aluminum plus sulfate. Aluminum plus sulfate. Aluminum is 3 plus and sulfate is 2 minus. 2 minus. Positive and negative. Here we will have crisscross. crisscross करेंगे. किसका crisscross ma'am. करते हैं? मैम वैलेंसी का। हम बैलेंसी का। ठीक है? आप ये वैलेंसी समझ जाए। 2 minus SO4 3 plus 3 ब्रैकेट और यहाँ पर 3 लिखेंगे। इस 3 वैलेंसी। Because this the components, सारे components पर ये वैलेंसी ये नंबर आएगा, वो सल्फेट बन जाएगा और ऑक्सीजन पे भी आएगा। इसलिए इसको हम किस चीज में रखते हैं? ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है?
जस्ट आई एम टेलिंग यू। ओके मैम। अब हम आ रहे हैं आपके मिनरल एसिड के कॉम्पोजिशन पे, जहां आप लोग ने कहा कि मिनरल एसिड्स हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। बट चिल्ड्रन यू शुड नो, children you should know that this mineral is again पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। उसमें भी क्या होता है, हाइड्रोजन होता है पॉजिटिव और क्लोराइड होता है नेगेटिव, अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो अभी हम लोग वही चीज देखेंगे ताकि आपको एक रिकॉल हो जाए कि हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाए, ठीक है। ताकि when you will learn about the chemical equation, तब आपको उसको बैलेंस करने में और उसको क्रॉस करने में आपको आसानी होगी। इसलिए हम इसको एक बार फिर से बताते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। यस बोलो। मैम वीडियो में नहीं दिख रहा ठीक से मैम, पूरा धुंधला आ रहा है। मैम ठीक है, मैम फिर सही दिखाई दे रहा है। नो मैम ठीक है मैम। मैम इसी का इंटरनेट खराब है। Now is it visible? यस मैम। मैम पहले भी सही था। Positive and Cl is H is positive and chloride is negative. Now children, hydrogen is also having one valency and chloride is also having one valency. So if you will this cross, then you will get HCl. No, that will be cancelled. Equal valencies are just stabilized, उसको cancel कर दिया। तो आप 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको H2SO4। अब आप लोग बताओ कि हाइड्रोजन में कितना वैलेंसी होगा। जैसे इसका 1 हुआ इसका भी 2 होगा ना, और SO4 का कितना होगा 2 माइनस, ठीक है। अब इसको प्रेस क्रॉस करिए, आपको क्या फॉर्मूला मिलेगा H2SO4। H2 आपका H2 पर चला H पर चलाएगा और ये 1 आपका सल्फेट पर चलाएगा। अब इसको आप लोग धीरे धीरे रिकॉल कर रहे हो हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड दिस फॉर्मूलास, जिसको आप लर्न कर रहे हो वो बना कैसे है ये जानना चाहिए ना आप लोग को। यस और नो? यस मैम। हाँ प्लीज रिस्पॉन्ड। आप लोग कीजिएगा तो समझ में आएगा कि आप समझ रहे। Then again we have this उसका नाम क्या है H3PO4 sulfuric acid. Sorry for phosphoric acid. PO4 it is phosphoric acid, उसमें फॉस्फेट है और फॉस्फेट का फॉर्मूला वैलेंसी होता है 3 माइनस। तो इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पॉजिटिव है PO4 3 माइनस। अगेन दिस वन इज नीड, इसको हम प्रेस क्रॉस करेंगे और ये हो जाएगा H3PO। This will be your phosphoric acid. So this is how it is derived. नहीं तो दिख रहा। हाँ मैम थोड़ा शिफ्ट कीजिए, मैम कैमरा थोड़ा शिफ्ट कीजिए, मैम वो देखिए वो नहीं दिखाई दे रहा। लेकर कैमरा आई थिंक इस वे आएगा। हाँ अब दिख रहा है। Now I think it is visible.
यस Yes, यहाँ पे है, ma'am. ठीक है. Now, so this was a recapitulation of your this how to prepare this mineral acid from different types of minerals. So the first thing what you have to remember the you can say symbol and values जो आपके चैप्टर नंबर 3 में दिया हुआ. चैप्टर नंबर 3 का भी हेल्प 4 में लेना है, तभी आप इसको समझ पाएंगेगा, बिकॉज बोथ द चैप्टर्स आर कोरिलेटेड. ये दोनों चैप्टर आपका कोरिलेटेड. So we were talking that there are two types of acid, mineral acid and organic acid. Now children tell me what are organic acid? Organic acid क्या है? Acids which are derived from Which are naturally occurring and are obtained from plants and animals. So acids which are derived from naturally occurring agents or materials you can say. So that is your plants and animals. तो आप देखते होंगे कि जितने भी तरह के हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, certain fruits and vegetables, milk, these all contain different types of acid. ये अलग-अलग तरह का acid contain करता है. So that we will learn, वो हम लोग को याद करना है. और कैसे याद करना है? By their name. Guava is containing oxalic acid. This is simply you have to mug up. You have to learn. Guava, oxalic acid. Orange, lemon, amla, citric acid. Grape, tamarind and gooseberry, tartaric acid. Milk and lactic acid. Milk contains lactic acid and vinegar contains acetic acid. So these all are very commonly used products which are obtained from either plants or animals, and we have to know their name. Then one thing very important, bees and wasps and stink of ants. When it is stinking on our skin, it causes a lots of pain. Shooting pain is there. So why is this shooting pain over there? क्यों ऐसा shooting pain? Due to the presence of form yes, due to the formic acid. presence of formic acid in the sting is होता है जो हमारे स्किन पे आने के बाद बहुत ही शूटिंग पेन देता है. और उसको स्टेबलाइज करने के लिए आप देखते होंगे कि हम लोग कभी उसमें आयरन लगाते हैं, कभी कोई एंटीसेप्टिक लगाते हैं. तो सबसे पहले क्या किया जाता है, रिएक्शन उसमें आयरन लगाते हैं ताकि उसके पेन को रिएक्शन के द्वारा सबसाइड करवाया जाए. और वो बहुत ही यू कैन से उस पीरियड के लिए फॉर द टाइम बीइंग इट इज वेरी वेरी एक्यूरेट ट्रीटमेंट होगा. नाउ देयर इज टू टाइप ऑफ एसिड. ये तो आप लोग पढ़ लिए. अब एसिड में ही दो कैटेगरी है, एक है जो स्ट्रॉन्ग है और दूसरा है जो वीक है. अब जो मिनरल से प्रिपेयर हुआ एसिड है, दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. That is your nitrate, formic, sulfuric, hydrochloric. These all are very strong acids. But what about the organic acid, which we derive from plants and animals? They are weak acid. They are weak acid. Then this definition you will give. What are dilute acid? I have given you that previous day this definition. Acids which contain large acids which contain a large amount of water is called dilute acid. Large amount of water and less amount of mineral. And less amount of percentage acids which have less percentage of more percentage of water and less percent of acid content is known as dilute acid. ऐसे करके बोलिए आप लोग. You should learn the definition in a you can say in terms of science. साइंस के टर्म में आपको इसको लर्न करना है.
ठीक है? Okay, Then ma'am. concentrated Acids which have a को very बोलते low content of Acids water. which have अब ये निकालो small amount of water is called concentrated. Acid contain water very concentration of acid which contain water very low. water का जितना less, that will be more. Okay? And they are very harmful also. Acid, we should be very careful. ये आपको घर में यूज नहीं करना चाहिए. You should not work with concentrated acid at your home, but mineral जो organic acid होता है, that we are using at home also very frequently. Like lemon juice हम लोग टेस्ट करके भी बता देते हैं. Like अगर हम लोग मिल्क ले रहे हैं तो हम लोग उसमें lactic acid ले रहे हैं. So in that way we can say that these acids which are organic, they are less having mild, you can say, action on the body, but as compared to the minerals. Then we are, one thing is there, आप लोग कभी एसिड रेन के बारे में सुने हो? Have you heard? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Have you heard acid rain? Yes, ma'am. What is acid rain? Some harmful gases, when some Rainwater rainwater is chemical and मिलता है. it falls on the earth is called acid rain. And get mixed with and make the Different types of gases which are released in the atmosphere in the form of pollutants, like your carbon dioxide, nitrogen dioxide, or the smokes from which are released from the factories. They all are containing this high percentage of pollutants which are getting dissolved when they are coming in contact with rainwater. And when they fall on the surface of the earth, they form acid rain because they are like if carbon dioxide, you have to understand this. अगर CO2 रहेगा और वो हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो कौन सा एसिड बनाएगा? बताओ. मान लो वाटर के साथ CO2 का कॉम्बिनेशन हुआ तो वो कौन सा एसिड बनाएगा एटमॉस्फेयर में? H2 plus CO2 तो क्या बनेगा? कार्बन हाइड्रोक्साइड. कार्बन मैम कार्बन हाइड्रोक्साइड कार्बोनिक एसिड नहीं बन जाएगा? कार्बोनिक एसिड बनेगा ना? यस H2CO3. कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? CO2. H2CO3. CO3. तो ये सब जब आपका डिसॉल्व करेगा पॉल्यूटेंट्स तो ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और जब हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में ये रिएक्ट करता है आपके पॉल्यूटेंट्स के साथ तो आपको वो रेन की तरह जब रेन वाटर के साथ जब डिसॉल्व करता है तो वो एसिड में बदल जाता है. सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ H2O का रिएक्शन होगा तो क्या होगा? H2SO3 बन जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा. बनेगा ना? Yes, so ma'am. in that way we can say that all these pollutants which are coming in the atmosphere, they are again being transferred to the soil or to the surfaces which are there in the environment. तो हमारे environment में जैसे सपोज कर लो कोई मॉन्यूमेंट है जो मार्बल का बना हुआ है, तो मार्बल का बना हुआ है तो दैट इज आल्सो मिनरल और वो जब फॉल करेगा उस पे तो वो क्या शो करेगा? इट विल शो सम बैड इम्पैक्ट ऑन द कलरिंग ऑफ द मार्बल. मार्बल जनरली किस कलर का होता है ये बताओ? मार्बल इज जनरली व्हाइट इन कलर और उस पर अगर एसिड का बार बार लेयरिंग आएगा, कोटिंग आएगा थ्रू दिस पॉल्यूटेंट्स,
then that will become yellow. White. And that is Yellow. this is the reason. Yellow. Yellow. This is the reason why the marbles are becoming yellow. The monuments like your Taj Mahal and all is becoming yellow. This is known as, this is the bad impact of the acid rain, which is causing yellowing of Taj Mahal or bigger building made of marble. Now, next topic is your bases and alkalis. We all know that bases are bitter in taste. तो क्या हम लोग सब bases को जाकर टेस्ट करेंगे? टेस्ट उसका हम लोग लेंगे माउथ में डाल के? नहीं, we will not taste. लेकिन हम लोग जानते हैं उसको टेस्ट करने के क्रम में we know that bases are bitter in taste, उसका क्वालिटी. लेकिन ये all of a sudden कभी-कभी हो भी जाता है. जैसे आप सोप लगाते हो, उसको वॉश करते हो, तो कभी-कभी वो वाटर क्या होता है हमारे माउथ में भी चला जाता है ना? तो that gives you some bitter taste. But there is one other category of bases, and that category is that this bases, when they are dissolving in water, then they are known as alkalis. वैसा बेस जो आपको वाटर में डिसॉल्व कर जा रहा है, they are known as alkalis. There are a few examples: sodium hydroxide, aluminum Copper hydride. are weak bases. Some bases like these potassium, sodium hydroxide, they are strong base, but ammonium and copper hydroxide are weak bases. ये सब weak bases. लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कलीज बोलेंगे, क्योंकि ये soluble है water. When we are talking about acid and bases, then we have to know about indicators also. What are indicators? कोई definition बताओ? An indicator is a substance which shows different. Indicator is a substance which Different color in acid. Basic medium. Yes. indicator is a substance Indicator which is a shows substance different which color shows in different colors in acid. an acidic and basic medium. Now, give me for few names of indicators. Turmeric, China Turmeric, China rose. litmus paper, China rose, phenolphthalein. Turmeric, litmus paper, phenolphthalein, China rose. Turmeric, China rose, litmus paper. Now, litmus paper is prepared by which type of Phenolphthalein also. substance? और ये कहाँ से obtain होता है? लिचेंस जो आपको ग्रो करता है, उसी से एक सोल्यूशन बनता है, और उस सोल्यूशन से हम लोग लिटमस पेपर को डिप करते हैं उसमें, और उस सोल्यूशन के थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कौन सा एसिडिक कैरेक्टर का सब्सटेंस है एंड विच वन इज ऑफ द बेसिक कैरेक्टर. कौन सा बेसिक कैरेक्टर? Then we will talk about neutralization and formation of salt. Neutralization reaction and formation of salt. Neutralization reaction, who will define? Ma'am, can I? Between an acid and a base. What is neutralization And reaction? the base is to form salt and water is known as neutralization. Chemical reaction between an acid and a base to form salt is called neutralization reaction. Known as The neutralization reaction between reaction. acid and base results in the formation of salt and water is called neutralization. And a base to form salt and water. आप लोग थोड़ा सा रिएक्शन आप लोग यहाँ देख लो, so that you can recall that reaction process also. वो भी आप लोग यहाँ पर black and white में देखो. Yeah, no noise.
like sodium hydroxide plus HCl. Now children, जैसे आप लोग फॉर्मूला बनाने में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को कंबाइन करते हो, इसमें भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ही कंबाइन होता है। तो उसमें आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि बने Sodium and hydrogen plus hydrogen. then only you are knowing positive and negative ion. When I am explaining on a topic, then that will not benefit you. Here positive, negative. We have to use hydroxide. This is positive, negative. Positive will combine with negative and negative will combine with positive. अब आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि what will be the compound form? Salt क्या बनेगा? Sodium chloride. Sodium chloride. As a combination of two other type of elements. Next question is potassium hydroxide. K2H. Now again this is one compound minus positive. Here you can see, यहाँ balancing भी आपको हम दिखा सकते हैं. Balanced equation ये नहीं है. This is not a balanced equation. Why? Because it is 2K, 1SO. 2H2O. 2 H2O, so H2 is 2, here it is 3. So you will write, तब आपका ये balance हो जाएगा. Now आप बोलोगे कैसे balance हो गया? तो देखो. यहाँ 2 में से आपका K2 हो गया. और ये 2 तो पहले क्या था 3 हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ पे से ये 2 हो हाइड्रोजन also became 2 so 2 2 and 4 अब आपको 4 लाने के लिए यहाँ पर अंडरस्टूड मैम बोर्ड का पूरा इमेज नहीं आ रहा. हाइड्रोजन को नहीं समझ में आया सो वंस पहले हम बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं कहीं भी कुछ नहीं ठीक है यहाँ H2 ये मेरा कंपाउंड फॉर्म हुआ रिएक्शन के ऑर्डर मूव कीजिए ना रिएक्शन के थ्रू फॉर्म हुआ है मेरा थोड़ा तो बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस करने के लिए हम बैलेंस पोटेशियम. मैम कैमरा को ब्लैक बोर्ड के साइड कीजिए ना. वेट अ मिनट अब दिख रहा है Yes, ma'am. Yes, यस ma'am. मैम दिख रहा है बट पूरा दिख रहा है. पोटेशियम है K2 यहाँ पर 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम यहाँ पर मेरे पास 1
तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 2 यहाँ लिखते हैं। अब ये 2 जब लिखते तो पोटेशियम तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। कैसे? यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो हमको इधर भी 4 चाहिए ना, 4 हाइड्रोजन चाहिए के लिए यहाँ पर 2 दो तो ये 2 में से मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया और इधर का भी हमको ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। ठीक है? बस तुमको येलो वाला पेन दिया था ना, याद है ना, पिंक वाला पेन लिया था मैंने, येलो वाला पेन दिमाग में निकाला। आप डिस्कसिंग आपस में डिस्कशन बंद करो। जो पूछना है आप यहाँ क्लास में पूछिए। तुम रखो। Any question you are having related to this, you can ask. आने के लिए बोलियो। इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। बोलो। अरे बाप रे, इधर मैं भी कॉफी के लिए पोटेशियम और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों को बैलेंस करना है, दोनों साइड, लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में। 2 जब अगर हम यहाँ लिखते हैं तो पोटेशियम बैलेंस हो गया, उसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ, लेकिन उसके लिए so what work you have to do now? I can see through this class, I can judge that many of you have not gone through these lessons. So कल आप लोग जितना भी चैप्टर में इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप लोग बैलेंस खुद करोगे और सबमिट करोगे। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? जो भी आपके बुक में दिया क्या? नॉट मोर देन दैट, ठीक है? मैम बुक में सिर्फ 2 दिया हुआ है। और उस चैप्टर में भी तो दिया हुआ है आपको, उस चैप्टर में भी इक्वेशंस दिया हुआ है ना, आप कोई से ले लो। ओके मैम। थर्ड चैप्टर में, ओके चैप्टर मैम। 3 में जो इक्वेशन दिया हुआ है, you take it from the naming of salt. This is the next topic. Salt sulfuric acid को हम क्या बोलेंगे? Sulfate. It will be called as sulfate. Salt of hydrochloric acid will be called as chloride. Salt of nitric acid will be called as nitrate. Salt of sulfurous acid will be called as sulfides. Salts of carbonic acid will be called as carbonate. And salt